and another one is this program is going to listen this port 8888. Okay, so this is my program. Next option, this is requirements. Tornado, what is this? It's a library. If you check it here, I am importing Tornado. पाइथन प्रोग्राम को इमेज बनाएंगे, उसी इमेज से फिर कंटेनर बनाएंगे. उसका मतलब क्या हुआ? वो पाइथन एप्लीकेशन जो बनाया वो कंटेनर में रन करेगा. ठीक है. And requirement means that is the library files, and docker file, this is your docker file. If this file is going to show you any error, sometimes this pip install, this line is going to show some error. Okay, and then I'm going to send you another one more file. We have to write here some upgradation option of pip. What is pip? Pip is a package manager of Python, same as yum dna package manager of Linux. Pip same Python package manager. So डॉकर क्रिएट हुआ था, एंसिबल डेवलप किया था पाइथन से. नहीं नहीं, ये डॉकर मैक्सिमम उसमें गो सी प्लस प्लस ये सब यूज़ किया था. अभी मेरा टारगेट क्या है? कंटेनर के ऊपर पाइथन का एक प्रोजेक्ट डिप्लॉय करना. ठीक है. यहाँ वीडियो भी है. ठीक है, सक्सेस वीडियो है. अगर यहाँ कुछ एरर देता है तो इसको देखना. तो करना क्या है? प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस? mkdir. okay, let's see how any directory is there. Yeah, already mypy is there. cd mypy. Oh, it is used by Terraform. rm minus f a b. Okay, vi. My Python program name is server.py. I open it, copy it, paste it here. This is actual Python program. Okay, it is developed by developer. So I'm just utilize it. Then requirements. Then docker file. Inside of docker file, it is going to use Python, and then app is a directory inside of container, not here, inside of container. Then pip install, pip through requirement.txt, that is Tornado is going to install. Then command through Python. I am running this server.py file. মাইনাস এক্ষুনি খেয়াল আসছে না কিসের জন্য দিয়েছিলাম, বলে দিচ্ছি, পরে দেখে বলে দিচ্ছি. So let's try to create the image. If image is created, fine, I am going to show you next level. If in image it is going to show some error, sometimes it is going to show error in this line, pip install, then we have to add one more line,
Right now code is not here, so you have to run one more line, upgradation of pip. Okay, if I upgrade it, automatically it is going to run. It is depends on some OS related options. Huh? No. Upgradation within this Docker file. See, what I am going to execute in Docker file, it is not going to execute anything in this machine. It is going to execute inside of container. So right now it is going to build the image. So when it is build the image, everything is inside of the image. This pip, everything is inside of the image, not in machine. Right? Image builded over. Now from that image, when I create the container, these are available. So let's see. Docker file requirement.txt and server.py. Docker build -t py img 123 and dot. My image name is py img 123 and dot means current location. In this location it is going to check the Docker file. Build the image. Everything is inside of this image, not in machine. Check it 1/4. It is showing 1/4. We will discuss this is. Here it is showing 1/4. Then it is going to show 2/4, 3/4, 4/4. So in future, in advanced Docker, after this Docker project, we will discuss it. Okay, what is this? Why this? So let's see. ls docker images. So one Docker image is created, py-img 123, and what is the size? 1.01 GB. Okay, so my image is ready. Now next steps. Number one step is, so Docker file plus Python project. From here we create image, and this image size is around 1.01 GB, right? Next, what is our target? Number one, we create container, testing purpose, and then we are going to access the container. Fine. Next options, we have to push to hub. Either it is a public hub, that is Docker hub, or we are going to create our own hub, that is private hub. That is public, this is private. Private means inside of the company only. Okay, inside of the company we are going to create one registry, Docker registry. This is known as Docker hub or Docker registry. That is my next job. Push to hub, that is public and private. হাব মানে যেমন গিটহাব ছিল,
সেম অ্যাজ ডকার হাব, মানে ইন্টারনেটে কোথাও একটা সার্ভার রাখা আছে, সেখানে আপ করব। থার্ড অপশন, your image size is around 1 GB. We have to reduce it. Okay, image size should be 200 to 300 MB. Not zip, some other method, not zip. जिप करेंगे तो होगा ही, लेकिन जिप करके तो आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे ना, कंटेनर बनाने के टाइम तो जिप से नहीं चलेगा ना। सो हाउ टू रिड्यूस दिस इमेज साइज, राइट? So this is our target. So first container and push. Today we are going to continue it, and then after the second project, Docker related second project, then we will try all the advanced option. See, right now when I am going to create any container, I am not going to maintain what should be the hard disk size of the container. Okay, how much memory is going to use by the container, how much CPU is going to use by the container, right? What should be the IP address of container? आप जब बनाते हैं ना VM में मशीन, आप बताते हैं ना इतना GB हार्ड डिस्क होगा, इतना मेमोरी होगा, CPU 2x2 होगा, लेकिन कंटेनर में तो कुछ नहीं बताया अभी तक। स्टिल नाउ आई डिडंट मेंशन एनीथिंग। जैसे वहाँ आपने बताया नेट या ब्रिज, वहाँ से IP लेगा, तो कंटेनर को भी तो बताना है ना सब कुछ। And then we will check what is the IP address of container and all the informations. And I already show you in this, when it is going to create this image, it is going to show 1x4, 2x4, 3x4, 4x4. So these are layer. So we are going to discuss what is layer and how to minimize this layer. Okay. If 4 layer to 3 layer, then automatically it is 1 GB to around 750 or 800 MB. Once I reduce one layer. Okay, this type of different options are there. We have to follow that options. So now what is our target? 2 options. One is push to hub and another one is this image to container creation. Okay, so let's see. First I am going to create the container and check it. Which program? Docker file, basically your that is as a Devops engineer. Okay, but if you know its added advantage, if you don't know, that is a problem. So Docker file लिखना आपको सीखना है. Suppose py नहीं मैं यहाँ दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत होने से ही हो जाएगा. cd py proj. ये भी वीडियो में देखिए. So SDLC image created 5 seconds before it is created. This is the image and then I am going to create it. Okay, host is big one, na? That is now this command docker run. When I am going to create the container, I just mention docker run -p port number colon port number and using image. note container is small one, HC. Okay, first big one then small one. See, docker run port number and image name. Port number, what is this port number? Host port colon container port. Okay, हाई कोड होता है ना, हाई कोड HC, हाई कोड HC. यहाँ भी याद रखना HC, first host then container, right? So first host means host is going to use this port number and container that is 8888. कंटेनर तो 8888 होगा ही, क्योंकि आपका पाइथन प्रोग्राम के अंदर क्या था, 88 था ना, 8888. होस्ट में आप कुछ भी दे सकते हो, मतलब कोई भी पोर्ट दे सकते हैं,
देखिए मैं दिखा रहा हूँ। एक्सेस कैसे करेंगे देखिए। ब्राउज़र ओपन कीजिए, HTTP से उसी IP एड्रेस या लोकल होस्ट 127 भी डाल सकते हैं, कोलोन वही पोर्ट नंबर। It is तो ये showing. हेलो वर्ल्ड ये कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम वेयर? Why it is कंटेनर showing? से, Because here it is mentioned. क्योंकि मैंने कंटेनर को हिट किया है। Fine. ठीक So है, it is showing hello world. Fine. लेकिन कंटेनर से Now, कैसे आया? मैं देखिए, आई एम it is यूजिंग माई showing what होस्ट happened. दिस मशीन। Check it when. ओके, लाइनेक्स मशीन, सोचिए लाइनेक्स मशीन के अंदर एक कंटेनर है, इनसाइड ऑफ द लाइनेक्स मशीन वन कंटेनर इज देयर, राइट? आई एम Say, I एक्सेसिंग दिस just कंटेनर refresh. फ्रॉम माई होस्ट। Watch it. What it is going to show here. Browser is in HTTP host, not related in log container. is I am not in going to inside of the refresh. container, Just one refresh. but I am accessing the It is container. showing what happened. One more request. So I am using this HTTP host server address request protocol, colon HTTP host this, port this, number. that, everything. Gate So port, host this, port all is this. redirect to Once you container refresh, port. it is going to show. Fine. Okay, So and it is accessing the container. Control C. I just break it. আমরা I'm যখন going to বানিয়েছি create দিয়েছি once না এত more. কোলন এত, Now প্রথমটা হোস্ট related, host আমরা protocol নিজে I'm থেকে going দেবো to change হ্যাঁ 80. এ দেখো আমি 80 দিচ্ছি My host protocol when I'm going to use it through हाँ? browser it is 80, but container side it is चलेगा 8888. Fine. देखिए just check this line docker run -p 80 colon 8888 what is the meaning of this host is going to use 80 by default HTTP port right so when I try to open this container I'm not going to use any port number because 80 is default okay port number either use this 80 that is common for HTTP or you can use more than 1024 क्योंकि पोर्ट नंबर 1 to 1024 that is used block all the known protocol and others 1024 से बाहर मतलब उससे बड़ा you can utilize any port but so many ports already used जैसे MySQL में क्या मिला था आपको 3306 है ना तो 3306 आप अगर यूज करेंगे तो MySQL यूज कर रहा है तो आप क्यों यूज करेंगे ठीक है तो आपको समझना है और कितना दूर तक होता है 65,535 ऐसा कुछ है वो रेंज है उतना दूर तक ही आप दे सकते हैं नेटवर्क में जाइए CCNA का कोर्स में सब मिलेगा CCNA का जो कोर्स है ना उसका जो बेसिक नेटवर्किंग है उसमें मिलेगा आप गूगल में लिखिए लाइनेक्स पोर्ट नंबर या विंडोज पोर्ट नंबर या प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नंबर तो दे देगा पूरा डॉक्यूमेंट क्या है क्या यूज होता है तो अगर आप ऐसे यूज करेंगे इफ यू आर यूजिंग दिस 80 colon 8888 तो फिक्स because inside of that Python program we mention already listen port this so container is going to listen only 8888 from host you can utilize anything right so if I am going to execute docker run -p see here I didn't use -it or -d or anything so it is in running mode check it here it is in running mode whenever you access it is going to show you the details fine so docker run port host port container port then your image name this is our target so here my image name is pymg123 okay so docker run -p मैं पहले सिंपल सा दे रहा हूँ 80 कोलोन और पाई IMG 123 यही था ना पाई IMG 123 पोर्ट
यहाँ पर आप लोकल होस्ट लिखिए HTTP, देखिए हेलो वर्ल्ड आ गया। इसको ना देखिए यहाँ पर ये रन हो रहा है, HTTP रिक्वेस्ट आया, ठीक है, उसको दे रहा है कंटेनर का IP एड्रेस 172.17.0.1, सॉरी उसका गेटवे कुछ होगा, उसका IP एड्रेस डिफॉल्ट है, ये यहाँ से इसको एक्सेस किया है, क्योंकि रिक्वेस्ट टू होस्ट मशीन टू कंटेनर, ठीक है। तो कंटेनर जाने के लिए तो कुछ उसका भी, कंटेनर का भी कुछ गेटवे होगा, गेटवे बिना कभी एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं इसको कंटेनर को फिर से बना रहा हूँ एंड आई एम यूजिंग आपका 1 2 3 4, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, लोकल होस्ट के साथ कोलोन, देखिए आ गया, ठीक है, यहाँ भी रिक्वेस्ट आया, यहाँ भी हेलो वर्ल्ड दिखाया। तो आपको इसी तरह पोर्ट फॉरवर्डिंग करना है, और याद रखना है होस्ट टू कंटेनर, पहले होस्ट फिर कंटेनर, ठीक है। कंटेनर तो फिक्स, होस्ट में आप अपना डालिए, जैसे मैंने 80 डाला, 80 कोई प्रॉब्लम नहीं है, HTTP है बाय डिफॉल्ट 80, 80 से अगर अलग कुछ डालना है, जैसे आपने बताया 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 डाल दिया, ले लिया, वो हो गया। तो मुझे याद रखना है ये कंटेनर को ऐसे एक्सेस करना है, लेकिन ये सीखने के लिए, बाद में बताएंगे विदाउट पोर्ट ही ओपन होगा जब कुबरनेटिस में जाएंगे, ठीक है। अभी ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। क्या हुआ, हो गया, कितना आया, मेल आया, क्लाउड का एग्जाम दिया था, हो गया क्लियर, कौन सा दिया था, अच्छा। बोलो एनी डाउट्स, कोई डाउट्स है इसमें, अभी इसको पुश करना Sir, है। what is ये the significance? एक मिनट, या समंता टेल मी। Sir, what is the significance of tornado? What actually it will do? It is nothing, it is the library file of the Python. Okay. Okay, so many, more than 1 lakh library file is there. Whenever we are using anything inside of the Python program, we have to attach some library file. Okay, got Okay, it. so this is just library file. Okay, sir. And why I didn't use Tornado directly, I use one requirement.txt. Why? Because in real time project there was number of libraries we have to attach. Suppose 50 library files. Okay, X, Okay. Y, Z, Tornado, different library files. So we are going to add everything in requirement.txt and we install via pip. So pip is going to install all the library file in one shot. Okay, Okay, sir. Yeah. collection of library in one file. Yeah, sir, got it. Okay, so হ্যাঁ, তুমি কন্টেনার একটা রান করছিল, তুমি 80-তে ট্রাই করে দেখতে পারো, হয়তো ক্যাশ থেকে আসবে এটা, যেহেতু ক্যাশিংয়ে আছে। দেখো আনাবেল আর 80 আর পারছে না, কারণ ওটা কনভার্ট হয়ে গেছে 1 2 3 4, ম্যাপিংটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কারণ রিলিজ করার কিছু নেই, ও ওর সাথে ম্যাপ করছে, ঠিক আছে। তোমার সাথে একজন বন্ধু কেউ আছে, তার সাথে তোমার রিলেশন রয়েছে, ম্যাপিং, ঠিক আছে, ব্রেক হয়ে গেছে, তুমি আরেকজনের সাথে রিলেশন করেছো, অন্য একজন বন্ধু, তাহলে ওর সাথেও কাট হয়ে গেছে, সেম জিনিস, ওই পোর্টটা ছেড়ে দিল। आयुष कोई प्रॉब्लम है, ये समझ में आया? सुब्रत समंत, सुब्रत इट इज क्लियर। Yes, sir. जमीरुद्दीन, मोहम्मद जमीरुद्दीन,
So this is Docker related first section. Second section is Docker networking, Docker volume, okay, Docker related, that image size minimization. फाइन, चलो एक चीज देखते हैं, पुश वाला ऑप्शन भी. Oh. Say Docker push. In our case, our image is created. So main option is we have to retag it. My account name is this one, Manav Hub. hub.docker.com. This is my account. These are the repository. Okay, in this repository you can create one new repository. Suppose I am creating one new repository. My repository name, repo at 9 a.m. public, create it, already exist, 9 a.m. new. So this is repo at 9 a.m. new. So this is my account name, this is my repo name. Okay, inside of this repo, now I want to push it. So how to push it? Check it. Command is here. Docker push manavhub / repo at 9 a.m. इसे मैं कॉपी करता हूँ, तो समझ में नहीं आएगा. कॉपी, अच्छा इसी में ही करते हैं, बेस्ट ऑप्शन. This is the command. Okay, so before push we have to retag it. So we have to retag means renaming. Check it. I am using this name. And my image name, what is my image name? Pi img 123, na? 123. So what is the meaning of this? What is the command to push? Docker push. Now when I am going to push, I have to mention, na, I am pushing, but where it is going to push, in which account, in which repo. Then I have to mention everything. I am pushing this image in this account inside of this repo. All the information is within this name. Check it, Docker push, this line. All the information is there, na? I am pushing in this account, in this repository. This is the image name. Okay, but image just created image name only. Then what is the requirement of retag? That image, if I check in my local machine, image is pi img 123. We have to change this. Okay, we are not going to rename it. We are going to copy it. Actually it is copy. Pi 123, that is also there, and new one also there. It is just one retagging. And what is this retagging time? This one, existing image ID.
Okay, image ID. So let's check it. Where is my machine? Let's close it. So if I check docker images, this is one command. Docker image ls also same. So one image is there, pi img123. We have to retag it. Okay, how to retag? The command should be docker tag, then image id. This is image id, right? So docker tag this is image id. Then we have to mention my account, my repo colon this one, right? So I'm just going to copy this one and paste it. So command is perfect. Docker tag the id, the tag, and then hub user, repo name and tag. Again check it. हाँ बोलो बोलो. Tag is complete image name plus repo plus তোমার অ্যাকাউন্ট নেম, এইটা হ্যাঁ হ্যাঁ, কারণ ও সবসময় একটা লেটেস্ট হিসাবে ধরে, ভার্সন হয়, ভার্সন 1, ভার্সন 2, ভার্সন 3, আর যখনই তোমার লাস্ট একটা হবে সেটা হচ্ছে লেটেস্ট ইমেজের নামটা, ব্যাস। এবার তুমি .v1 .v2 এসবও করতে পারো। So image list, check it right now, your original image also there plus this one also there, right? That is your retagging. Now directly docker push, but docker push purpose login also mandatory. Okay, without login if you try to push it is going to ask. So let's see docker push this one, right? Preparing and denied because of login. So docker login -u my username, it is asking password. I am not sure. Login success. Now I try to push it. লাইব্রেরিটাকেও আনছে, তার মধ্যে পাইথন সফটওয়্যারটাও আছে কিছু, তবেই তো রান করবে, ঠিক আছে? ওই জন্য ওই সাইজটা হচ্ছে। সো ইট ইজ শোয়িং it is over. So let's see, this is my docker hub repo, refresh it and check it, pi img123 is available here, right? So this is the way how to push it. Clear? So up to this try to clear. Next option is our project
then advanced portion or rest portion of the Docker. Docker networking, Docker volume, Docker image size minimization. Okay. So I'm sending this video